Wish you a very good morning. A warm welcome to my next class of spelling rule number 7. आइए स्पेलिंग रूल्स के इस थर्ड वीडियो में हम कुछ और रूल्स की चर्चा करते हैं. Some words have longer vowel sounds while others have shorter vowel sounds. If a word has a longer vowel sound and ends in E, if we add a suffix to such words, drop E and add the suffix. कुछ ऐसे शब्द जिनमें वोवल साउंड थोड़ी लोंगर होती है, डिप्थोंग्स की साउंड होती है और लास्ट में ई आता है, और यदि हम उसमें कोई वोवल साउंड से शुरू होने वाला सफिक्स ऐड करते हैं तो हम ई को रिमूव कर देते हैं बिफोर एडिंग द सफिक्स. फॉर एग्जाम्पल शाइन, SHINE प्लस ING और ED. Shined. We shall retain this E and add D and ING to it after removing this E. हमने इसमें ED ऐड करने से पहले इस E को रिमूव कर दिया और ING को ऐड करने से पहले भी इस E को रिमूव कर दिया and it becomes shined और shining. Shine, bright, bright, चमकना. नेक्स्ट है hope, आशा करना, to expect. Hope ends in E and ho, this is a longer vowel sound, hop plus ING or ED, it becomes hopped. Remove this E before adding this ED and ING to it. Hopped, hopping, expecting. Next is plain plus ING or ED, it becomes planed or planing. PLANING. We shall remove this E before adding ED and ING to this word plain. Plain means to fly without moving wings, like a plane, like an aeroplane. This plane means to fly without moving wings. Shine, hop, plain plus suffixes. We shall remove E of these words before adding these suffixes and they becomes like this. But almost the confusing words, for example shin, SHIN instead of shine, this is shin. Here this E is the shorter vowel sound as compared to I in the word shine. Shine, shin. Hop, hop. Plain, plain. In this way, they have shorter vowel sounds. If the words have shorter vowel sounds, always double the last consonant before adding suffixes beginning with vowel sounds. आइए यहां पर एक वर्ब देखते हैं, shin. Sin means to climb, to climb, to scale. Or if we add ED or ING to this word shin, it becomes shin, shinning or shinned. It's a verb. But in case of shine, we shall remove E and we shall not double any consonant. But in case of shin, because of shorter vowel sound, we shall double this consonant before adding suffixes. It becomes shinned, shinning. Next is hop. As you know, hop means to jump, uchalna. Here, this is a shorter vowel sound. If we add ED or ING to the word hop, we shall double this P last consonant. Hopping or hopped, hopped or hopping, we shall make double P before adding ING or ED
to these words. Next is plan. If we add ed or ing to the word plan to make a plan, we shall double the consonant n before adding the suffixes and it becomes planned or planning instead of planned or planning. These are confusing words and the students usually get confused while spelling these words or while using these words in their communication skills. How can we remember these words and the difference between plane and plan? Plane means to fly like a plane. Plane को plane से याद कर सकते हो, which flies without moving its wings. Plan means to make plan, योजना बनाना. Now let us come to rule number 8. In case of rule number 8, when a word ends in E and we add suffixes like hood, meant, full, less, beginning with a consonant sound, retain E, retain the last E of this root word. For example, false. If we add hood as a suffix to the word false, as you know, false ends in the letter E. We shall not remove this E and we shall retain this E while formation of a new word falsehood. We shall retain this E. यहाँ स्पेलिंग में हम इसको FALSHOOD नहीं लिख सकते. It will become falsehood. FALSE. E को हम रखेंगे यहाँ पर. Next word is advertise. Advertise ends in E. If we want to add a suffix beginning with a consonant sound, means meant, to make it a noun, it becomes advertisement. Although this vowel sound becomes shorter in case of I in the word advertise, the verb. This is advertise, but after adding this suffix meant to this word, this verb, it becomes a noun. We shall retain this E in the spellings of this word, but we shall short this vowel pronunciation of this vowel sound and it becomes advertisement instead of advertisement. Next is hop plus full. Retain this E, it becomes hopful, hopful. And next is wire plus less. It ends in E. Retain this E before adding this suffix less to it. It becomes wireless. In this way, we can make certain nouns by adding suffixes to these verbs by retaining the last. Let us discuss next rule, next spelling rule, rule number 9. Words ending in TE or verbs ending in TE, if we add TION to make nouns, as we have learnt in the videos of word formation. But here we are going to discuss the spelling rules. In case of word formation, then remove or drop TE before adding TION to these words to make nouns. For example, celebrate. Celebrate is a verb. It ends in TE, and if we want to add TION to this word to make it, to change it into a noun, it becomes celebration. We shall drop this TE before adding TION to them. For example, one more example is there, complete. Complete is a verb that ends in TE. If we add TION to it, then drop this TE first and then add TION to it to change into a noun, completion. Completion. In this way, we can make nouns
by adding tion suffixes to certain verbs, but we shall keep in the mind that we have to remove, we have to drop te, the last te, before adding tion to them. Next rule is rule number 10. What does it say? It says if certain nouns end in e and we have to add them y as a suffix to change them into adjectives. If these nouns are formed into adjectives, are changed into adjectives by adding just a suffix, a single letter suffix y, then drop this e before adding y to them. For example, noise. It ends in e. Before adding this y to change it into an adjective, drop this e and it becomes noisy. Noisy. In the same way, bone. Drop this e and it will become bony. Bony. Ice. Drop this e before adding y to it and it will become icy. These are adjectives formed by adding y to these nouns. By dropping e. This is the thumb rule. Next is rule number 11. If certain words are there ending in L, and if we want to add ly to them, it becomes lly. It becomes double ly. They become together double ly or lly. For example, final, real. These are adjectives ending in l. If we want to add ly to them, they become finally or really. This ll becomes double here. We shall not drop this l before adding ly to them. In this way, we can form new words by keeping certain thumb rules, by keeping in mind certain thumb spelling rules. Now, let us discuss spelling rule number 12. If some adjectives end in consonants other than L, रूल नंबर 11 में हमने चर्चा की उन एडजेक्टिव्स की जिनके लास्ट में L आता है और फिर हम ly ऐड करते हैं तो डबल इट बिकम्स डबल L. But if certain adjectives end in other consonants other than L and we have to add ly to them, never double the consonant. For example, quick. It ends in K, not L, and we are adding ly to it. It becomes quickly without doubling L. Fluent. If we add ly to it, it ends in T. Add ly to it, it becomes fluently. Fluently. Don't double the consonant L in such cases. Now let us come to rule number 13. Rule number 13 says that certain words ending in double L. रूल नंबर 11 में हमने चर्चा की थी कि हम नए फॉर्म्ड वर्ड्स में L को डबल कर देते हैं, लेकिन यहां रूल नंबर 13 वो उसका अपोजिट रूल है. इफ a word ends in double L, for example, all, well, etc., and we have to add certain suffixes to them, for example, most, ways, then always drop the last L and L becomes single L. For example, almost, almost, instead of this double L. यहां single L रह जाता है. It becomes almost, always. Next is well plus come. Drop this last L before adding the suffix come to well
and it becomes welcome. In this way, keep the spellings of such new formed words in your mind. Now, let us come to rule number 14, spelling rule number 14. If certain words end in LE and we have to add LY to them, then drop this LE before adding LY. For example, fashionable ends in LE and we are adding LY to them. यहां भी हम डबल नहीं करेंगे. First, remove this LE or drop this LE before adding LY to it, and it becomes fashionably. Fashionable plus LY, fashionably. Honorable plus LY, honorably. Remove this LE. Certain more examples: gentle plus LY, LE plus LY. क्या करेंगे? Drop this LE before adding this LY to it, and it becomes gently. Next, noble. Remove this LY, drop it before adding LY to it, and it becomes nobly. In this way, we can form many words with the help of these 15 spelling thumb rules. आप इन तीनों वीडियोस को देखिए और इन थंब रूल्स को नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और जब भी आपको इस तरीके के शब्द अपनी कम्युनिकेशन में, अपने स्किल्स में यूसेज करना है, तब आप इन 15 स्पेलिंग थंब रूल्स को फॉलो करते हुए स्पेल द वर्ड्स करेक्टली और फाइंड आउट द इनकरेक्ट और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स और मिसस्पेल्ड वर्ड्स इजीली. डियर स्टूडेंट्स, हमने स्पेलिंग रूल्स से रिलेटेड 3 वीडियोस देखे. इन तीनों वीडियोस पर में हमने 15 स्पेलिंग थंब रूल्स की चर्चा की. यदि आप इन 15 थंब रूल्स को प्रॉपरली याद करेंगे, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू स्पेल ऑल द वर्ड्स करेक्टली एंड you will be able to find out incorrect words or misspelled words. अब आइए हम एक जनरल बात करते हैं, how to tackle the questions related with spellings or how to tackle spelling questions in competitive exams or in board exams. किस प्रकार से हम उनको टैकल करें. कई बार हम वर्ड की सही स्पेलिंग्स जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हैं. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. उसके लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन थंब रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां मैं 5 रूल्स की डिटेल में चर्चा करूंगा जिनको फॉलो करके आप क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट इज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. कई बार हम इंस्ट्रक्शन को ही केयरफुली नहीं पढ़ते, जिससे हम क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाते. इट्स योर ड्यूटी टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली वेदर यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली और इनकरेक्टली. सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि ये जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है या इनकरेक्टली स्पेल्ड फाइंड आउट करना है, मिसस्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड. यहां आप जब डिसाइड करेंगे, यदि आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, वर्ड स्पेल्ड करेक्टली अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो करेक्टली स्पेल्ड होगा. दूसरे 3 वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मिसस्पेल्ड होंगे. ऐसे केस में आपको वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली फाइंड आउट करना है. अगर आपको मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, तो आपको 3 करेक्टली स्पेल्ट वर्ड दिए जाएंगे, 1 मिस स्पेल्ट दिया जाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड अमंग दीज. पहला वर्ड ऑप्शन ए में आपको मिस स्पेल्ट दे दिया. हम जल्दबाजी में
बाकी के आंसर्स को पढ़ते ही नहीं हैं, बाकी के ऑप्शंस को देखते ही नहीं हैं और ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है ऑप्शन बी भी मिस स्पेल्ट है, ऑप्शन सी भी मिस स्पेल्ट है और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। या ऐसा हो सकता है कि ऊपर तीनों जो वर्ड दिए गए हैं वो तीनों करेक्टली स्पेल्ट वर्ड्स हैं और लास्ट में डी ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ द अबव। तो इसलिए आवश्यक है रीड ऑल द ऑप्शंस और चॉइसेस इंटेंटली। जब तक आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे कभी भी आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, रीड ऑल द ऑप्शंस इंटेंटली एंड नंबर 3, प्रैक्टिस अ लॉट। बहुत अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इसलिए आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करें। फोर्थ इज गो थ्रू कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। आपको कहीं ना कहीं कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी। इसके लिए आप अपने टीचर से भी संपर्क कर सकते हैं। गो थ्रू द कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड मेक द नोट्स और राइट देम डाउन। प्रैक्टिस अ लॉट। एंड लास्ट instruction to follow is pay attention to not in the question। कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन को ही नेगेटिव बना दिया जाता है एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमें सब कुछ सही सही पढ़ने की हैबिट होती है। हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स को बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए हमारा माइंडसेट होता है कि हम उसमें से करेक्ट वर्ड को ढूंढें, जबकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा होता है नॉट करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आजकल तो डबल नेगेटिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। हालांकि ग्रामेटिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछना गलत है। दिस इज नोन एज रिडंडेंसी। It makes the statement or question double negative। But मैंने अभी देखा बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर्स में, चाहे वो नीट का क्वेश्चन पेपर हो, आईआईटी का क्वेश्चन पेपर हो या यूपीएससी का ही क्यों न हो, क्वेश्चंस को डबल नेगेटिव बनाकर पूछा जाता है ताकि बच्चे को फंसाया जा सके। आपको ध्यान रखना है कि कहीं क्वेश्चन में नोट वर्ड तो नहीं है, नॉट और फिर इनकरेक्ट इस तरीके से पूछ लिया जाता है। इस पॉइंट को आप स्पेशली फोकस करेंगे और आशा करता हूं आप इसको गलत नहीं करेंगे। नोट इनकरेक्ट मींस आपको करेक्ट ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते समय आप यहां नोट और इनकरेक्ट को क्रॉस करके यहां पर एक अपना सिंबल लिख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। नोट इनकरेक्ट मींस करेक्ट ढूंढना है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इंटेंटली। कई बार क्वेश्चन को इस तरीके से बहुत सारे सिनोनिम्स में पूछ लिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, मिस स्पेल्ट, स्पेल्ट रोंगली और wrongly spelled, और not incorrect, not correct, not misspelled means which is spelled rightly। यदि आप क्वेश्चन को, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, you will be able to find out the most appropriate or suitable answer to the question and you will get full marks and you can excel, you can perform well in the paper of English. Thank you very much.